What's up guys, I'm back again with another video। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्लॉगिंग के ऊपर। व्लॉगिंग से रिलेटेड हम सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। व्लॉगिंग होता क्या है, व्लॉगिंग से रिलेटेड जितने भी मैं टिप्स दे सकता हूँ आपको, अब तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए बेस्ड ऑन दैट, और व्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ मिथ्स भी हम ब्रेक करने वाले हैं। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एन इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट व्लॉगिंग, जिसके बाद हम बात करेंगे आगे गियर्स के बारे में, फर्दर एडिटिंग के बारे में, और फर्दर हम कैसे वीडियोस को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस सीरीज। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। So guys, इससे पहले we take a deep dive into the vlogging part. We should know what vlogging is. So vlogging has come up from the word blogging. So blogging is completely a text form of writing your story, your content, and you need a website for that. But eventually जैसे जैसे इंटरनेट का ग्रोथ होता गया और यूट्यूब बढ़ता गया, people started getting hands on smartphone, blogging बढ़ता गया because now people can very easily get access to daily vlog. Both blogging and vlogging is all about you. आप पहले क्या था कि आप क्या लिख रहे हो, आप क्या सोच रहे हो और आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो. Things have not changed in vlogging. People are still concerned and only concerned about what you want to show, what you want to speak and what you want your audience to experience. और इसी से रिलेटेड है मेरा पहला टिप. Since vlogging का सबसे important part होता है the vlogger, the person who is vlogging, it is very important that person should be happy while vlogging. You cannot make a sad vlog guys. आपको खुश होना पड़ेगा जब आप vlog बना रहे हैं. और vlog बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप बस vlog में बक 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 किए जा रहे हैं. You gotta be happy. और इसी से कनेक्टेड है वो सारे लोग जो आपके vlog का पार्ट बनते हैं. आपको बहुत ज़ोरदार फिल्टर मारने की ज़रूरत है यहाँ पर. किस टाइप के लोग आपके ब्लॉग का पार्ट बनने वाले हैं, आप कैसे लोगों को अलाउ कर रहे हैं आपके ब्लॉग में आने के लिए. ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कैपेबिलिटी रखते हैं जो आपके ब्लॉग को रूइन कर सकते हैं. मोर इम्पोर्टेंटली यू आर द पर्सन हु ड्राइव्स अ व्लॉग. सो आपका खुश होना, पूरे टाइम व्लॉग में स्माइल करते रहना बहुत ज़रूरी है. अगर आप अपने खुद के व्लॉग्स को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आपका ऑडियंस बिल्कुल एंजॉय नहीं करने वाला आपका. सो अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट वे टू व्लॉग इज एक्चुअली व्लॉगिंग सोलो. होता क्या है कि आप एक ग्रुप के साथ जाते हो और उस ग्रुप में कुछ लोग हैं जिनको जल्दी जाना है, उनको रुकना पसंद नहीं है. सो यू हैव टू टेक योर टाइम टू मेक योर व्लॉग्स गाइस. सो ऑलवेज मेक श्योर या तो आप सोलो व्लॉग बना रहे हो या उन्हीं के साथ व्लॉग्स बना रहे हो जो आपके व्लॉग में आने के लिए इंटरेस्टेड है. माई नेक्स्ट टिप इज ऑन रिसर्च. सो गाइस, आप कभी भी व्लॉग बना रहे हो, ऑलवेज प्लान अहेड एंड डू योर रिसर्च. रिसर्च करने से let's take whatever video you want to make. You want to make travel video, you want to make a video on you visited some place. So if you plan ahead and you have a plan in mind, your vlog looks more logical. आप in the middle of the vlog you will not be suffocating how to connect the dots. So कभी भी आप vlog के बीच में confused नहीं दिखने चाहिए, because वो confusion आपके audience तक communicate हो जाता है and they start feeling यार ये मैं vlog देख रहा हूँ या I am trying to see ये बंदा कैसे अपने लाइफ को सॉल्व कर रहा है, या how he almost was about to fuck up his travel plan and somehow he salvaged it. So इसलिए just plan ahead. थोड़ा प्लानिंग करेंगे तो अपने वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं. सो बिफोर वी मूव फर्दर, इफ यू आर विजिटिंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू. And since you have made it till here, I would request you to subscribe my channel and click on the bell icon so that you become a part of AllThatsSaid and do not miss our future videos. My next point of discussion is on how are you going to shoot your vlogs, your vlogging gear. I know you guys have been following a lot of big vloggers, who use very high-tech, high-end cameras, okay? Guys, one thing is very clear. You are going to start vlogging, or maybe you already would have been vlogging और आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी. The key to vlogging is to tell a story. Anything that can shoot 1080p at 60 frames per second, I think, is enough for YouTube. Most of the people, they watch videos at 480p, although you want to shoot at 4K or 6K or whatever K you want, they watch at 480p, man. So in that case, the best camera that you can get your hands on is your smartphone. I started vlogging when I was in Europe. And this is the thing that I started vlogging with, OnePlus 6. I think it's 3 years old now. It is still doing a good job,
but for some reason I've stopped using it. It is there with me. It's an Android phone. I don't want to throw it. After that, I got my hands on iPhone 6s. This is a few generations older than this phone was launched, but still for some reason the capability of this phone and the camera is so nice that I got hooked to it. और मैंने काफ़ी videos बनाए इस phone से. You can go and watch. I think the Bhandardara video has been shot on this. So after spending some time with the iPhone 6s, I got a hang with the camera and I started loving it. So I switched to iPhone 11, and for some reason the camera is very nice. It has got good audio capabilities also. It picks up the audio really well without a mic. Also in my recent vlog, I have introduced the DJI Osmo Pocket, which is a small mini camera which I have been using for vlogging of late. And this whole setup I can talk about in a separate video where I'll be completely talking about gears and setup and vlogging kit. So we make sure you watch that video. My next point is storytelling. So guys, whatever vlog you're making, it is basically a piece of story in your whole life or your whole travel that you want to share it with your audience. So what really happens that if you don't have a story in your mind, or you might have a lot of clips but you cannot weave it into a meaningful story, the audience might get confused from right from the beginning of the vlog till the end of the vlog. और शायद जब तक vlog खत्म होता है, he might not be happy to give you a like or a comment or a share, or maybe not praise whatever you have done, or maybe he might not be tempted to share it with other people. How to start and end a vlog, ये सबसे important चीज़ है. So whenever you start a vlog, always make sure पहले 30 seconds के अंदर आप audience को बता दो कि भाई वो क्यों आए इस वीडियो पे. अगर आप अपने audience को first 30 seconds में ये नहीं बताते कि आपको वीडियो में क्या दिखाने वाले हो आप, so कहीं ना कहीं वो फॉरवर्ड करना चाहेंगे दिखने के लिए. ओके, लेट्स डू अ फास्ट फॉरवर्डिंग. ये चीज़ एल्गोरिदम को बहुत गंदी तरीके से हिट करती है, बिकॉज यूट्यूब एल्गोरिदम actually catches this forwarding thing and takes it as if the first few minutes of the video is boring and bullshit, and that is how your video starts ranking lower in the search results जब आप अपने keywords जो भी डाला आपने टाइटल में सर्च किए जाते हैं. So be very careful, it might have a lasting impact on your video. I prefer adding some teaser, 10 seconds teaser, जिससे ऑडियंस को ये समझ में आता है कि भाई आने वाली वीडियो में 10-15 मिनट में 5-10 मिनट में जो भी मैंने वीडियो बनाया है वो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं तो छुपी हुई है वीडियो में. सो इससे ना जस्ट गिव देम अ बेट टू वॉच द फुल वीडियो. नाउ कमिंग टू द एंडिंग पार्ट, never try to end your vlog abruptly. So that is the worst thing that a vlogger can do. So always make sure, अगर आपके पास footage भी खत्म हो चुका है and you don't have the right footage to end a video, stop there. Bring yourself back in this kind of a setup जहाँ आप अपने audience से वापस connection establish करते हो और vlog को end करते हो in a different manner. You can ask them a question and ask them to answer in the comment section, and if they really like the video, they will definitely hit the like and share button. So make use of the ending very wisely. So my next tip is on shooting. आप किसी भी सिनेरियो में vlogging के always make sure you shoot more than required. Have more footages guys. जितना ज़्यादा आपके पास extra footage होगा पोस्ट में उतना लाइफ ईजी हो जाता है. अगर आपके पास फुटेज कम है, यू आर डन मैन. आई मीन दैट्स द मोस्ट क्रेजियस्ट एंड स्टूपिडेस्ट थिंग कि आपने छोटा फुटेज लिया है, स्टार्टिंग में शेक किया हैंड, एंड में शेक किया हैंड, बीच में योर मेन पार्ट इज देयर, एंड देन यू फाइंड ओके दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड मैन. मैंने क्यों नहीं लिया. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कैमरा से बात कर रहे हो और बात करते करते बीच में यू जस्ट जम्बल अप समथिंग. टेक अ डीप ब्रेथ, पॉज and again repeat that same line so that post में आप जाके वो part, don't change your background, stay like that, talk again that same part जो आपको लगता है आपने थोड़ा सा उसको fuck up कर दिया है. So that's the time, shoot it right now in the same background और फिर बाद में post में उसको join कर दीजिए. So that is one trick which I use personally, although आसपास के लोगों को थोड़ा सा ये weird लगता है, ये क्या कर रहा है all of a sudden कुछ भी बोल के चला गया. Screw them. व्लॉग आप बना रहे हो वो नहीं. थोड़ा एडिटिंग के बारे में पहले से सोचने लग जाओ यार, कैसे एडिट करने वाला हूँ मैं व्लॉग को. That's how you will be able to make the best of your available footage. How to vlog in public? This is one question which I don't know if there is a proper answer to it. So I will also answer based on my experience. You see, to be able to vlog in public like a pro, the best solution is to start practicing at home. You see, when you start practicing at home, a lot of things will pop out. Like, what is your best profile, this or that, where do you look while talking, आप कैमरा में बात करते वक्त झिझकते हो,
आप कैमरे में बात करते वक्त आपकी आंखें इधर उधर जाती है, how easily you can get distracted with people moving here and there. Although घर पे बात कर रहे हो, घर पे vlogging practice कर रहे हो, तो you will not find people moving here and there. But public में ऐसा होगा, तो आपका attention span क्या है अपने कैमरा के साथ, आपने एक thought frame किया, आप फटाक से उसको किस तरीके से एक सेंटेंस में तब्दील कर सकते हो और एक कट ले सकते हो. These things will develop over time. मैं भी जब पहले वीडियोस बनाता था तो I used to get these hiccups, तो मैंने घर पे ही स्टार्ट किया है ना. घर पे बनाएंगे व्लॉग यार, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार अपने आप को निहारो यार, कैमरे में देखो अपने आप को, आंखें कहाँ जा रही है, बोल कैसे रहे हो, दिख कैसे रहे हो, एटीट्यूड कहाँ है, कैप पहनने की ज़रूरत है या नहीं, ग्लासेस है तो आंखें चमकती है क्या, सब कुछ देखो पहले. पोस्ट में कुछ नहीं होने वाला. और when you are in action while vlogging, there is no chance of rectifying if you've done it. So practice at home. Get the maximum out of any location. So you are traveling somewhere, right? The whole journey is a content. Spend some time and look around. What I can actually make the most out of. Anything interesting here? That is how you should be vlogging. Don't go with this herd mentality. You are traveling with a group and the group wants to just rush and look at the places and just leave from the place. As a vlogger, that is a blasphemy for you. Your audience want to actually feel it, breathe it, what it feels like going there, right? From the people, the place, the scenery, the sky, the food, the culture, okay, anything. Even if you're not fond of things which maybe out of your interest, go there, because you are not making the vlog for yourself, you're making it for your audience. And that is why it is very important to have a very open mind and never be biased in your vlogs, guys. Got to have an open opinion about everything. Actually, you don't need to have an opinion about anything in your vlog. So guys, those were the tips from my side on how to vlog, and these tips are applicable for those who are vlogging for the first time and also for the people who are already vlogging. I hope that you find these tips useful and you're surely going to use these tips in your next video. Please like and share this video if you found this interesting. Comment below what else do you want me to make videos on in terms of vlogging. Make sure you subscribe to our channel and click on the bell icon so that you don't miss on the new videos on camera gear and how to edit vlogs, which are soon going to come up. And I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.